Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday with the next part in technical terms to be learned in plant breeding. Starting with the first one, that is ionization, that is loss or gain of an electron by an atom. Next one is irradiation, that is exposure of biological material to radiation. Basically mutagenic radiation की बात हम यहाँ पे करते हैं plant breeding में. नेक्स्ट वन इज आइसोजेनिक लाइन, वो लाइन जिनका सब कुछ सिमिलर होता है एक्सेप्ट वन लोकस या वन जीन. लाइन्स आइडेंटिकल इन जीनोटाइप एक्सेप्ट फॉर वन जीन. बट प्रैक्टिस में देखा जाता है कि जो लिंक जीन्स होते हैं वो कई सारे मीन्स नॉट वन मैनी जीन्स, बट वो क्योंकि लिंक्ड होते हैं तो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. In practice, such lines will also differ for some more genes that are closely linked to gene of interest. Therefore, they are usually known as near isogenic lines. नेक्स्ट इज आइसोलेशन, दैट इज दो प्लांट या दो प्लॉट के बीच में जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें मेंटेन करना होता है. सेपरेशन ऑफ टू और मोर प्लांट स्ट्रेन्स और पॉपुलेशन टू प्रिवेंट मीटिंग अमंग देमसेल्स, usually achieved by distance and or border rows. Next one is pheromones, that is these plant allochemics affects insect behavior and physiology in such a way as to result in adaptive advantage to the insect pest. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैनेटोकोर, दैट इज सेंट्रोमियर. जब हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया दिखता है जहाँ पे हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच होता है. दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज कैनेटोकोर. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up. Till that, take care. Bye bye.